from a long time ago, and I guess I it's a thought, month now. I mean, yeah, we have I, been planning back and forth, and it's a month now, and I think month I or wanted to more get it than, done. yeah. More than that, oh my God. And constantly, I really like your efforts because you know what generally happens with me is I am a very kind of bhulakkar person. If I have a targets aligned, tasks aligned, so like today also on the Friday, I forgot. And jo task itne sare hote, to Right. I keep the note, I keep the check, but lot of things were piled up, and I have lot of things to pending, and I just get 2 days to complete everything. Right. So that's the reason I got free right now. I said let's complete it off and let's Yeah, just that. because I don't want to delay it further. Okay, great. So first of all, Yeah. Shruti, welcome to the podcast. अपना इतना precious time दिया. So we will keep it Hindi and English both. So it is comfortable for हाँ you. दोनों मिक्स हाँ इट्स Okay. मिक्स So quickly start करते हैं आपका introduction के साथ. So थोड़ा सा introduction दे दीजिए. Then we move ahead. Okay, so my name is Shruti and I am an engineer. तो मैंने अपनी लाइफ की ऐसे की थी कि like I want to be an engineer, I want to go in IITs and everything. So I started with my engineering life, but then still remember, I was back in third year and I was sitting down there and we were giving exams and a lot of things were going around, assignments and everything. Then there was a workshop going on where there our senior who was about to head the workshop, he suddenly his family got some kind of urgency and he was not able to. Then I was the sudden senior after him, so I had a task like you need to attend the workshop and take the care of. So that was the moment I first time did any kind of hosting sort of thing, or let's say interacted with the people on so much grounds. And that the moment I realized I am not made for just doing already tech work, or let's say technical things or 9 to 5 things. So that hit me hard, and I was sure by then that I'm like my skills, my com skills, my technical skills, they are made, but again it gives a combination to the marketing side. So I decided for the fourth year, like I'm gonna go in the marketing, and I landed up in the marketing job. Then there was I had been working since like it's been 4 5 years now, and right now currently I'm placed in Geeks for Geeks, and I'm working as a branding and collaborative executive there, and that's it's a pretty much roller coaster ride. We will Right. just see how the thing's gonna work for me and everything. Yeah, I will tell you slowly Okay. and slowly. Okay, Yeah. great. So being a computer science or engineering student, how tough it was to get into this marketing world or I mean, to be frank, I mean, it was really, really very tough. So back in 2018, like I got my job that was marketing only. A bit of marketing. It was more toward B2B kind of business. But then again, I realized like I hold more worth of it, and I decided to go for the GMAT exam and prepare for my MBA and everything. But COVID happened, and people who have planned things were already. I don't have any second plan then. So I had no option. Then I took a technical job only. मैंने technical job ली जो मुझे मतलब कोविड के टाइम में यार it was very difficult to find a right. job, and मेरे को एक ईयर का गैप आ गया था because I was studying for GMAT exam and I was solely die hard preparing for GMAT, and मेरा एग्जाम 3 से 4 बार डिले होता गया. तो I took the job because मेरे पास कुछ financial aspects भी थे जो मुझे ध्यान रखना था and everything. So I took the job and I started going through the interview process. I got faced rejections marketing में. Then I took टेक्निकल जॉब. मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं कहा लेट्स गो फॉर इट. इट हैड अ Okay. बॉन्ड एंड एवरीथिंग. यार देखा जाएगा श्रुति, अभी पैसे नहीं है. आई नीड टू गो फॉर इट. So I Okay. joined it. Yeah, I joined it, and then it had a bond of like almost 1.8 or 2 years, let's say. Okay. So, but again, 2 साल एक बंदा जिसको मार्केटिंग का पैशन है, जिसको मार्केटिंग में जाना है, जिसको पसंद नहीं है 9 to 5 का, मतलब 9 to 5 कोडिंग करना बेसिकली. Okay. तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट देन अगेन मैंने अपना पैशन और अपना कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी. देन आई वॉज इन बिटवीन स्टडिंग, मतलब मैंने अपनी कोर्सेज करे जितने मैं कर सकती थी. मैंने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स उठाए. मैंने जितना मैं अपनी तरफ से बीइंग 9 to 5 जॉब मैंने जितना करना चाहा मैंने किया. बट देन देयर वाज अ वर्ज एट द टाइम लास्ट ईयर बैक इन अक्टूबर. आई वाज सिटिंग एंड आई वाज लाइक यार बहुत हो गया यार. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनीमोर. आई रिजाइंड. Okay. आई डिडंट हैव एनी जॉब अपॉर्चुनिटी. मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं Hmm. थी. एंड उस टाइम बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा था. एंड Great. आई टुक अ स्टेप एंड आई सेड कि यार लेट्स क्विट इट, लेट्स डू व्हाट आई वांट टू. एंड मेरी लास्ट कंपनी में देयर वाज अ बॉन्ड ऑफ 3 months, सो Oh, आई great. डिसाइडेड टू क्विट इट अगेन. एंड मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे एंड आई हैड टू गेट अ जॉब. Okay. सो दैट वाज अ चैलेंज अगेन कि टेक से फिर मार्केटिंग में आना. Hmm. ठीक है, फिर 2 साल मैंने अगर अपनी टेक में आई हैव स्पेंट इट आउट, तो Great. पीपल गोना काउंटर मी. एंड या सेम थिंग हैपेंड विद मी. पीपल स्टार्टेड काउंटरिंग मी कि यार आपके पास तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है और आपने 2 साल प्रॉपर टेक में किया, आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे? यू वांट टू Hmm. कम इन द मार्केट, राइट?
But I kept on, I created my website, just Right. to stand out of the area कि मेरे को stand Hmm. out करना है, मेरे को stand out करना है. Hmm. मैंने जो efforts मेरी side से डाल सकते थे, I made a website out of me, I made a portfolio out of me, I reached n number of HRs personally to the DMs, or let's say to the LinkedIn. I got LinkedIn Premium, I got Naukri Premium, हर चीज मैंने back and forth की, and slowly things happened, and I lined up in a job in Geeks for Geeks, and it was Okay. within the time span of 1 to 2 months. I mean, but then again, it was not good days, but yeah, Hmm. it taught me a lot. So yeah, it was a mixture of you can say nervousness and excitement, but again, if you think something of it, like you want to do it, you can get it. I mean, no one can stop you. Yeah. Okay. Yeah, right. So let's break all these things in the parts. So can you define the technical job that you were working, like what type of works you got there? Okay, so in technical, basically, I was into the cloud operations. So Okay. there, we basically worked on the regular expressions and everything. So it was Hmm. typical tech-based job, and I used to do my 9 to 5, 9 to 6 shift, and after that, I used to do everything within the marketing side, and that was basically just about the technical Okay. job that. Okay. So let's discuss more about your interest and your passion. So what the basic difference you see between technical jobs and this marketing world? Because you are the person who did both the things, right? So you can answer it in a better way. To be precise, I mean, there are friends of mine who are who were with me back in the college days and currently Hmm. pursuing the technical thing. I believe if you are a tech person, you love coding, you love doing bugs out of it, you love everything, related Hmm. to, let's say, tech. Right. So I guess it's pretty much just about it, because a tech job is more of less of the creativity. But Hmm. again, I don't want to confine that with the words. Marketing is more of creativity and learning new things. You need to be totally updated in the market world, what's going on. Like these recently threads were out, right? Right. So you should be updated कि यार कब क्या launch हो रहा है, क्या हो रहा है. You should always take first movers advantage also. So marketing में आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, and marketing में ये benefit है कि मतलब if you are a extrovert person like me, and if you have a Hmm. good com skills like me, so I think कि आपको एक edge मिल जाता है चीजों को Hmm. cover करने के लिए. टेक में मुझे एक चीज सही लगती थी, लाइक आई वाज असाइंड अ टास्क, ठीक है, आई हैड अ प्रोजेक्ट, आई हैड टू डू इट. बट मार्केटिंग में इफ यू आर असाइंड अ प्रोजेक्ट, अरे ये तो शुरुआत है, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू हैंडल अ टीम, यू हैव टू, they're Hmm. totally two different niches. So Right. I loved marketing because I didn't like coding since start, and I didn't like the kind of no, I mean, constant things, like again doing same thing again and again. So I'm very creative, Okay. so I want new challenges everything daily. So I thought कि this is not what made for me, and I it's not like मैंने sudden drift किया. मैंने सोचा कि Hmm. नहीं नहीं एक ही दिन में decide हुआ. I have Hmm. worked and I have tested different lines. So Hmm. that's where I decided, I practically implemented, and then I decided, yes, this is not made for me. This is marketing is made for me. So this is the Hmm. kind of difference which I felt, and yeah. Okay. And Yeah. Geek for Geeks तक की जर्नी बताइए ना, वो कैसे प्लेसमेंट हुआ आपका? Because it's like it's tough to get job in the Geek for Geeks, like because it's not the MNC, so you can in the bulk, it's not higher in the bulk. So okay, so they see something big in you, and you are in the marketing role. So I think Yeah. it's important to discuss that thing, how the process and. Yeah. Okay, so let's flashback there. So I was looking for the jobs actively in Hmm. December this year. So what happened is I was going through the constant procedures, like LinkedIn पे resume upload Hmm. कर दिया, Hmm. jobs पे apply कर दिया Right. daily, but I was receiving no favor. Hmm. Then suddenly I used to go through the many videos which said like you should reach out to their personal DMs. अब Hmm. जैसे अब आप जॉब्स, आप किसी भी जॉब पे जाते हो तो देयर इज सम जॉब्स हैव द ऑप्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, सो आप उसकी Hmm. प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यू कैन डीएम हिम और हर. तो आई यूज्ड टू डीएम लॉट ऑफ एचआरस, लॉट ऑफ पर्सन, एंड ऑल्सो मैंने जो कंपनी के पर्सनल Hmm. जिस कंपनी में सपोज मैंने शॉर्टलिस्ट किया, मुझे जिस कंपनी में जाना है, तो आई यूज्ड टू रीच आउट द पर्सन हु आर company, Hmm. and I used to ask them to give me a referral. एक नहीं, I used to reach out 5 to 10 persons within the same company, Okay. because ऐसा नहीं होता कि हर बंदा आपको रेफरल दे देगा. Hmm. तो आई Right. 2 to 3 लूप, एंड Hmm. मेरे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे, एंड Hmm. देवर कंपनीज वर गुड. बट अगेन दैट टाइम आई नीडेड समथिंग, मुझे अपना टेक के बीच में और मार्केटिंग की जॉब के बीच में ज्यादा गैप नहीं लाना था, बिकॉज वो Hmm. काउंट होता है इन Hmm. एज एवरी. अगर ज्यादा गैप आ जाए 2 to 3 months, इट्स सफिशिएंट. बट Right. ज्यादा गैप आ जाए तो
गिग्स फॉर गिग्स में मेरे साथ कैसा हुआ, लिंक्डइन का मैंने पार यूज किया, तो आई यूज टू फॉलो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जिनके जॉब के रिलेटेड कंटेंट होता था। तो वन डे देयर वाज, आई यूज टू फॉलो वन क्रिएटर जो कंटिन्यूअसली जॉब का काफी डालती थी। तो आई कमेंटेड हर, मतलब मैं कमेंट करती थी, तो शी पर्सनली लाइक्ड माय कमेंट, उसको मेरा कंटेंट मतलब कमेंट इतना अच्छा लगा, शी लाइक्ड इट, शी रीच्ड मी आउट इन द डीएम्स, तो वी हैड अ नाइस कन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग। So again, one day she gave me a link कि यार this is the job and it is internship in Geeks for Geeks, you can apply. तो आई अप्लाइड इन गिग्स फॉर गिग्स एंड एवरीथिंग, कमेंट के थ्रू ही हुआ सब चीजें, यू नो देयर वाज अ प्रोसीजर सारा कमेंट के थ्रू, एंड आई अप्लाइड। बट अगेन एचआर रियली लाइक्ड माय प्रोफाइल, मैंने खुद की वेबसाइट एंड एवरीथिंग, व्हाट वर्क आई हैव डन बीइंग इन 9 to 5, दे रियली लाइक्ड माय प्रोफाइल एंड दे कन्वर्टेड द इंटर्नशिप इनटू द फुल टाइम जॉब। So that's how I landed in a job. So I believe कि अगर आपको कोई भी opportunity मिल रही है ना, don't miss it out. I mean, even it's an internship and you want to switch a career, because I made a switch of in career after 2 to 3 years. So I believe like कुछ भी मिल रहा है, like you want to apply anything out there, reach out to as many as connections you can. I mean, because उससे क्या होता है, you build a connection also. मेरी कुछ companies में जिनमें मैं गई भी नहीं, but I have built a connection also. कि अगर मुझे बाद में भी रेफरल डलवाना हो तो I have people there. So that's the power of networking again. On the LinkedIn is again a powerful tool. Right, right. Okay, so there is no interview and all for geeks. Yeah, there was an interview process. पूरा interview process था मेरा, पूरा 1 month interview process चला है. Okay. So I had पहले like this normal 3 to 4 rounds were there. मेरे proper 3 to 4 rounds चले हैं for a month. Okay. And after a month I got a confirmation कि yes, I am into the company, and I joined company in mid of the Feb. So Okay. I joined them. Okay, so can you explain the work role? What type of works you are doing on the daily basis? So basically, my work revolves around. So my profile is branding and collaboration. So my work revolves around branding the collaboration activities for the company, and let's say in terms of the influencer, whether in terms of anything. So any kind of branding activities, any kind of collaboration activities for the company, that comes under, because we have many events going on within the company. So that's given to us. Event wise, we took out the opportunity and choose the fit budget, and then we go ahead with the collaborations and creating. So that's pretty much just profile I work. Yeah. Okay, great. And let's discuss about the freelancing, and because you are also the part of that and personal branding, and personally you are building your brand. What type of works you are doing as a freelancer, and how you think what type of work it is? So just brief it. Okay, so freelancing का मैं अगर थोड़ा brief दूँ, so freelancing anyone can do, even you can also do if you have any kind of skill, let's say in the tech part हो गया, या फिर आपको एक simple website building आती है on the WordPress also, so you can do a freelancing, कोई भी कर सकता है. It's not a kind of restricted field, I would say. So let me give you a brief how a person can do a freelancing in social media, personal branding, that I have a expert. So लाइक मैं थोड़ा सा ब्रीफ जाऊंगी. जब 2-3 साल पहले जब मैंने स्टार्टेड फ्रीलांस, तो तब ना फ्रीलांसिंग का बहुत नया नया स्टार्ट हुआ था. अभी तो इट्स लाइक वेरी कॉमन थिंग. तो 2 to 3 years बैक तो ये काफी नई चीज थी. तो देन देयर वाज अ टास्क टू गेट अ क्लाइंट थ्रू फाइवर और अपवर्क एंड एवरीथिंग. So what I did, I simply created my Instagram account. I started working on it solely. Of course, I had skills. मैंने उससे पहले certifications, अपना knowledge लिया 1-2 साल. Then I created my Instagram. मैं the I started putting the content out. Let's say content. And I created my Instagram. कि मेरे अगर someone lands to my profile, they see my profile कि हाँ यार इसका content ये है. She works in this domain and everything is cleared through my profile. It's a kind of portfolio of me. Then I started reaching out to the people. तो लेट्स से मैं अपना नीश डिसाइड कर लेती थी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड के क्लाइंट्स उठाने हैं सोशल मीडिया के. देन आई यूज टू, और ऐसे नहीं कि आई एम रीचिंग वेरी हाई बंच ऑफ द फाउंडर्स, तो मैं मिड, तो जिनका भी बिजनेस है फाउंडर्स का, तो आई यूज टू रीच देम आउट स्टार्टिंग में. देन ग्रेजुअली एंड स्लोली आई यूज टू कोल्ड डीएम, आई गोज टू कोल्ड मेलिंग और ऐसे करके. देन इनबाउंड लीड आई थी मुझे फर्स्ट, बिकॉज आई वाज वेरी एक्टिव अबाउट व्हाट आई हैव डन, व्हाट माय रिजल्ट्स आर. मैं कुछ लोगों के लिए फ्री में भी कर देती थी समथिंग लाइक, जब क्योंकि स्टार्टिंग में यू हैव टू कीप एरियाज ओपन, बिकॉज आपके पास कोई पोर्टफोलियो है चीजें दिखाने का. तो या जैसे मुझे फर्स्ट इनबाउंड लीड आई, तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग देन. तो मैंने कभी अपवर्क और फाइवर नहीं इंस्टॉल किया. इट्स ऑल इनबाउंड एंड माय क्लाइंट वर्ड ऑफ माउथ. एंड उस टाइम आई स्टार्टेड, मतलब मैंने 6-7 months फ्रीलांसिंग की, बट देन अगेन आई discontinued it, and now again I started 2 months back, because abhi job mein you get a time to indulge yourself. 2-3 months back I started, and it's pretty much going back good. I mean, I had few clients जो मेरे पहले वाले थे, तो they knew कि I back, so they also contacted me. And of course मेरे Instagram, through my LinkedIn, people reached me out, inbound था everything. So this is how my freelance journey started. So freelancing में कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है. You just need to, if you're a social media or brand strategist,
first of all, make your profile so strong that if people are landing up into your profile, so they know, yeah, this person has something, right? If he or she can handle his or her account, then of course he has the capability to handle. And no of the my clients have ever asked me the portfolio. तो उनको मेरी जो मेरा पेज है उनको वही मेरा पोर्टफोलियो लगता है. तो फिर that's the big game. I mean, that's the thing. Of course. Okay. Yeah. So, how tough it was to get the first client as a freelancer? Because getting first client is the biggest thing I can say, and it is the biggest achievement also as a freelancer. Yeah. Then everything Yeah. becomes smooth as you get clients Yeah. and as you build your portfolio and all. Yeah. So I didn't get your question. Can you just please repeat again? I mean, I just Okay. your voice little bit. Okay. So I was saying getting first client is the toughest thing and one of the most biggest achievement as a freelancer because there is no one who is supporting you there. Like you are the only who is doing the things. So Yeah. how tough it was for you to get the first I mean, client? it was really tough. It was really tough because I was doing a tech job, and as I told you. But again, I was very, very focused in my mind कि यार तुझे करना ही नहीं है ये सब. ये बस तू इसलिए कर रही है कि तुझे पैसे चाहिए, and you need some financial aspect to sustain. Yeah, to be frank. At the end, everyone is working so hard. They need money. They need to earn, right? But I continued because मेरे को gap नहीं लाना था अपनी प्रोफाइल में. ठीक है, तो मेरे को टेक जॉब छोड़नी भी नहीं थी. I until unless I had something good to leave, and yeah, tech companies अच्छा pay करती है, of course. Right. So that's the thing. And what I did is मैं अपने freelancing के लिए ना, it was really very tough. तो मैं सहेली चटर्जी को follow करती थी. I used to read her content कि वो how she cracked her first client, right? मतलब not सहेली, but there were many people in the market. मैं अपना investment ऐसे करती थी कि I used to read how much, मतलब I'm a very I love reading, so मैं books read करती थी and everything. So also part of that, like मैंने जैसे बोला आई डिड कोल्ड मैसेजिंग. ठीक है, तो अगर इफ जैसे आई गॉट लकी, आई गॉट इनबाउंड लीड, बट इट्स नॉट लकी. उसके पीछे एक साल की Right. मेहनत भी. मैंने अपना ब्रांड बनाया. ठीक है, आई कॉन्स्टेंटली वॉज एक्टिव डे एंड नाइट. सो पीपल रीच मी आउट कि हाँ यार ये कुछ कर रही है सोशल मीडिया में. बिकॉज लोगों को ना रिटेनिंग पावर नहीं रहती है. आप एक दिन डालो, हफ्ते में 2 दिन डालोगे, लोग भूल जाएंगे. आपको हर सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा ताकि उनके दिमाग में क्लिक होए कि यार ये बंदी सोशल मीडिया हैंडल करती है, यार ये बंदी. तो इनबाउंड लीड ऐसे आती है. Right. आउटबाउंड की अगर मैं बात करूं तो आउटबाउंड में यू हैव टू पर्सनली ड्राफ्ट अ मेल और मैसेज जो सामने वाले बंदे को इतना कैची और अट्रैक्टिव लगे कि वो आपको रिप्लाई करे. और Right. आई जनरली फील लाइक जैसे बैक देन व्हेन आई यूज्ड टू सेंड द मैसेजेस कोल्ड कोल्ड मेलिंग. तो मैं अपने ना स्टार्टिंग के इनिशियल्स, क्योंकि अभी क्या होता है हम पूरा मैसेज नहीं कर सकते जब हम कोई Right. आपको मैसेज. तो आई यूज्ड टू कीप इट, जो 4-5 वर्ड होते थे मेरे को इतना हुक और कैची लगती थी ना कि पीपल यूज टू रिप्लाई मी. एंड टिल डेट इफ आई वांट टू मैसेज समवन ना, तो आई कीप माय स्टार्टिंग के 3-4 हुक. आई पीपल रिप्लाई मी फॉर श्योर. तो दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट इन अ वे कि सामने वाला बंदा इंप्रेस होकर आपको खुद रिप्लाई करे. एंड यार इट्स लाइक इफ यू आर सेंडिंग 50 पीपल, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको 5 या 6 लोगों का रिप्लाई आए. Right. Yeah. ये एक प्रोसेस है, जर्नी है. फर्स्ट क्लाइंट क्रैक करना बहुत टफ है. बिकॉज यार आपको कोई फ्यू पैसे देगा क्योंकि आपने कभी काम नहीं किया, राइट? Perfect. हार्ड एंड मनी. तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक देम बिलीव कि यस यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द राइट साइड. Yeah. सो आउटबाउंड प्रोसीजर में आपको काफी करना पड़ेगा. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, राइट, तो दे कैन जॉइन ग्रुप्स Yeah. वेयर पीपल वेयर मेनी फ्रीलांसर्स आर देयर. तो वो अपने सब क्लाइंट्स दे देते हैं Right. इंटर्न. So there you can learn, then you can show your portfolio there. तो ऐसे भी मतलब there are many process. Of course you have to find the which suits you. मतलब जो Yeah. आपको सस्ता लगता है उसके according I think people should go ahead. And it's not tough. यार कुछ मुश्किल नहीं. जब Yeah. तुमने सोच तो I mean nothing is difficult, I believe. Right. Right. And you need to figure out, like, just try the things and figure out how things are going and how things are working for you. Of course. How you will get. Things take time. यार हम लोग LinkedIn पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, लोगों ने अपनी गाड़ी ले ली फ्रीलांसर से. अरे यार उन्होंने 3 Right. की Right. है. हाँ. It's a long game. आसान नहीं होती चीजें, but you need to be consistent. You need to try things, and that's the power only. Consistency is the key. I mean, it's the key. अगर मैं कंटेंट लिंक्डइन पे आज डाल रही हूँ, ठीक है, मैं अगर हफ्ते बाद डालती हूँ, महीने बाद डालती हूँ, लोग मुझे भूल जाते True. हैं. अगर True. मैं कंसिस्टेंट कंटेंट डालूंगी Right. तो क्या पता कोई अगर मुझे फॉलो कर रहा हो तो उसको Right. पता होगा कि यार ये रिटेंशन में जाएगा, उसकी मेमोरी में जाएगा कि शी यूज्ड टू पुट आई. So this is the Right. inbound thing which happens. Automatically, Yeah. you are building your own and your own clients. Yeah, and the most thing I want to say, like, inbound leads are the most powerful. Like, if you are reaching out to someone, as comparison, like if someone is reaching out to you, the conversion Right. rate can be the more as comparison to the Yeah. outbound leads. Exactly, Right. because उसको नहीं है. They reached out Right. to you Yeah. So and you can crack it 80%. अगर आपके पास right. inbound lead आती है, then 70% of the game is done. Yeah. Right. Outbound में
30% of game is done. So Yeah. there is a Yeah, and here also I just want to add one thing, like try to like build your brand and be in the eyes of people, in the groups, in social media accounts and everywhere, and then you will gradually get some one clients, and like just want to know how you are doing and what you are doing, and then you can crack your deal. And start if you will try to get the outbound leads, so it can be tough for you and you will get demotivated and something like that. So first build content and focus on branding, I Yeah, think. and this can work for social media person. Right. Like I have few freelancing friends who are into tech and like who develops sites or something like that. Mm. So you don't need a strong social media presence. So Right. there is a difference. I mean, because social media and brand started just need to have himself a strong profile. Right. So that तुम should believe into it. यार तुम जाके बोल रहे हो मैं आपकी प्रोफाइल बहुत सही कर दूंगा, मैं रील्स पे इतने व्यूज ले आऊंगा. अरे क्लाइंट बोलेगा पहले अपने तो देखो आप. Right, true. That's true. It's not happen for technical person because technical things are different, right? So, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. yeah, या आई मीन दे डोंट नीड मोस्टली मेरे जितने भी टेक के फ्रेंड्स हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो दे जनरली टारगेट यूएस क्लाइंट्स क्योंकि वहां पे उनको yeah, बेनिफिट होता है. right. दे डू थ्रू फाइवर अपवर्क, उनके लिए अच्छा चलता है. एंड ऑल्सो लाइक द पीपल इन द मार्केटिंग ओनली जो उनका Hmm. मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स उनको वेबसाइट्स का भी काम दे देते हैं, तो दे हायर सॉफ्टवेयर Hmm. डेवलपर्स एज अ फ्रीलांसर, उनको वो सब टास्क दे देते हैं. सो दिस ऑल्सो Yeah, हैपेंस. right, right. Okay. So let's move towards the personal branding things. Being a software engineer, let's take example of me. Being a software engineer, how personal branding is important to me. So just to understand personal branding. It's really very important. I mean, for you, for me, for any Mhm. person, you need your identity, right? Right. अगर LinkedIn पे हम बात करते हैं, ठीक है? You Mhm. reached me out through LinkedIn, right? Right, right. Why would I do podcast with? I Right. searched your profile, what do you do, and how many podcasts you already have done. Right. Then I decided to Mhm. प्लान इट ऑन, राइट? Right. सो ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कोई भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म उठाते हैं, किसी की आइडेंटिटी उठा लो यार, मैकडॉनल्ड्स लो, उसका Right. एक ब्रांड वैल्यू, राइट? देन ओनली Mhm. पीपल गो टू, अदरवाइज पीपल डोंट वो, व्हाई वुड पीपल गो एंड बाय, राइट? Right. तो एक ब्रांड की जो image है, अगर आपकी वो Mhm. ही नहीं डिपिक्ट हो पा रही है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, एंड मैं बोलती हूँ कि लाइक पर्सनल ब्रांड वहाँ पे हर किसी को होना चाहिए. फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर वी कम टू द पॉइंट, Mhm. इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे सब कुछ Mhm. इन डिटेल प्रॉपर क्लीन है, लाइक योर Right. प्रोफाइल इज डन, आपका बैनर बताता है सही Mhm. से कि हरिओम डज दिस एंड एवरीथिंग एवरीथिंग, Yeah. ही इज दिस प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, आपका वर्क एक्सपीरियंस डन है, आपका पोर्टफोलियो अपडेटेड है, सब कुछ अपडेटेड है. एंड Mhm. प्लस यू आर कांस्टेंट विद द कंटेंट कि आपको पता है कि आपका यार ये नॉलेज है, Mhm. आपको टेक की ये नॉलेज है, आप एक्टिव हो. तो इफ समवन कम अक्रॉस योर प्रोफाइल, मे बी दे हायर यू एज अ फुल टाइम जॉब आल्सो. इट्स नॉट अबाउट जॉब ओनली, मतलब आपको इतनी इमेंस अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है ना एक ब्रांड वैल्यू, बिकॉज अगर Right. आपको कोई कोई आपको नहीं जानता है, तो इफ यू हैव अ सोशल मीडिया प्रूफ एंड यू हैव अ प्रॉपर पर्सनल ब्रांड कि यू आर अ पर्सन हु डज दिस, who is in mastery, who holds expertise in this field, so it's important. I mean, personal branding is important for everyone. I mean, Right. just not to have a client or something like that, Mhm. but again, for the job prospect, for Right. your own of showing the profile and everything. And job prospect also, job to the बहुत Mhm. important. Student should Yeah. have a good person. Yeah. Great. Yeah. Yeah. People That's have got, हाँ, people have got the job. I mean, essay because HRs reach out to you Mhm. Yeah. It directly happens. in your LinkedIn profile. Yes, exactly. That's the power of Mhm. the creating a personal brand on the Yeah. LinkedIn. Yeah, and like a personal branding, one thing I noticed through my account and through my podcast journey, like it's not about only job. It's like opens multiple doors. Like if there is event is going on, they can invite you for like as a speaker, as a guest, and sometimes happens like multiple things. Like you think like as a perspective of job only, but there are multiple and more better options opens up with the help of personal branding that I saw through this podcast, little bit podcast I'm doing. So understanding these concepts. I Yeah, mean, right. you reached out to podcast LinkedIn के थ्रू आपने, Hmm. अगर मेरा कोई पर्सनल ब्रांड ना होता तो आप क्यों मेरे साथ Right. पॉडकास्ट करते, Yeah, राइट? true. Right. एग्जैक्टली. एंड Hmm. ऑल्सो मतलब देयर आर लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स, तो ऑडियो Hmm. इवेंट्स में भी बहुत पार इवेंट्स के लिए इनवाइट करते हैं, एंड देयर Hmm. लॉट्स ऑफ थिंग्स यार. तो Right. आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको रैंडमली नेटवर्किंग हो सकती है किसी Right. कंपनी की, Right. किसी That's भी एचआर. तो like कब कहाँ से क्या प्रॉफिट हो जाए, कब क्या कौन सी काम की चीज आए, यू डोंट इवन नो. राइट. एंड हाँ, यू कहाँ शुड से बी कौन वेरी सा रास्ता ओपन हो जाएगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट. जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड faith on your work. That's it. एग्जैक्टली. Yeah. So let's move ahead and like I'm enjoying the session. So what are the suggestions you want to give for the students who wants to enter in this branding and marketing field?
लुक फर्स्टली आई वुड से ट्राई एंड टेस्ट एवरीथिंग, मतलब दूसरों को देख, दूसरों की ये देख के कि यार कौन कितना सक्सेसफुल है, डोंट गेट वेरी पैशनेट अबाउट इट कि यार हाँ भाई बहुत पैसा है तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यार। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में। द थिंग इज फर्स्ट यू हिट एंड ट्रायल्स, फाइंड आउट। मार्केटिंग में भी देर आर लॉट ऑफ सब डोमेन्स, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सब डोमेन्स है, ब्रांडिंग में भी बहुत सब डोमेन्स। ठीक है, तो आप पहले अपना पैशन फाइंड आउट करो, डू इंटर्नशिप्स, डू वर्क अंडर फ्रीलांसर्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स उठाओ, काम करो, ये सब चीजें करो। जब आपको श्योर हो जाए कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक अ करियर स्विच, देन वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग बनाओ, एंड कंटेंट अगेन प्लेज अ very important role. You know, there was a big MNC, I won't name the MNC. The HR personally called me back then and said, Shruti, your website which you created is very interesting, and we really want to continue things with you, but again we need a professional experience in marketing. So that's the reason we can't continue, but we really liked your work, and up go ahead, and future we will be in touch with you. So this is the power of how to make you stand out, right? अगर आपको करियर स्विच करना है तो डू समथिंग। बहुत रिज्यूमेज हैं, बहुत लोग हैं, so you need to figure out कि मेरे एक्सपर्टीज किस एरिया में है and how I need to stand out in the particular line. So टाइम लगेगा, I took me 2 to 3 days to create a website. WordPress पे मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने मेहनत करी है वेबसाइट। And if you want to check it out, it's shrutigupta.in. So you guys can just type and go and check it out. तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी, वेबसाइट बनाई। I used to personally DM HRs कि आप मैंने जाके मेहनत करके। तो I would say कि if you want to come into the branding line, make yourself first clear that this is what exactly I want to do. Then the main task वहाँ से start होता है। Follow many influencers or many people who are already in the line. उनका काम देखो कि व्हाट दे आर डूइंग, उनकी जर्नी देखो, स्क्रॉल डाउन, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट, लर्न अबाउट इट, मेक पिन पॉइंट्स कि यार दिस इज व्हाट इट इज स्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री, और हाँ इंडस्ट्री में खुद को अपडेटेड रखो। एंड यार स्टार्ट करो, मतलब स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट इफ यू वांट टू। आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता लगती रहेंगी, जब आप पैशनेट हो जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली खुद को अपडेटेड इतना रखोगे कि यू वुड नो कि अब क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को हर इंडस्ट्री में, इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, यू नीड टू एक्सेल दैट, एंड यू नीड टू beat the competition out. किसी भी इंडस्ट्री में there are many much of the people around doing same things, so you should know why people should follow you, why people should get the things done from you. So you should have that why factor. पहले आप अपना why factor find out खुद करो, then only the सामने वाला person will be able to find the why factor in you. This is the pretty things I would like to give the audience. Okay, great, that's amazing. And one more thing I want to add, like if you're trying to figure out your why and you're just trying to figure out your passion, don't be hurry on that. Like it takes time, and still I'm also figuring out what's my passion, but trying multiple things, right? Trying YouTube, job, and multiple things going on, and back related to the marketing and everything, but still trying. So it's not easy to get, like in a one day you will not get your passion, but you need to go through the multiple things. And one more thing, Shruti added the same thing, like if you want to, like you want to go into the branding thing, so and wants to follow any influences, so go through their like initial phase of their life, so you will get the motivation for that, like how they started, like what happened, we compare the first day with someone else 100 or like 1 year, so it is a very big gap. So you need to take care of that. It gives you demotivation sometimes. So that's the point I want to add here. कि ना आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए, मतलब मैं तो खुद से, Hmm. मतलब आई बिलीव ऑलवेज यू वर्सेस यू। खुद को फर्स्ट डे से देखो एंड खुद को लास्ट डे देखो मंथ के, देन कॉम्पीट योरसेल्फ कि यार मैंने पहले दिन ये किया था, आज मैं ये कर रहा हूँ, तो यू विल गेट अ इनर मोटिवेशन यार। if I'm comparing myself with someone who holds 100K of followers, that's a no edge, वो कोई वो कोई है नहीं। एंड एक टाइम मुझे 4 से 5 साल लग गए ये फिगर आउट करने में कि what exactly I want to do, and trust the process, believe in yourself, be consistent. These are the 3 bits which I like. Yeah, right. वन होती मेरे दिमाग में एक चीज आ गई बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट कि इनिशियल फेज में ऐसा हो रहा था कि मैं पॉडकास्ट मिस कर देता था, इनवाइटेड सम गेस्ट एंड लाइक बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट एंड समथिंग, बट देन आई रियलाइज जो रिग्रेट होता है दैट इज मोर पेनफुल देन डूइंग वर्क डन. So keep in mind, this is I'm telling because I go through that. So if you do work, not happen how it is going on, but at least you did that as comparison to the ignoring that and just being comfortable in another life. So make it done, so you will get inner motivation and it becomes your habit. Then you will never miss the podcast. Like अभी हम लोग 11 बजे रात को ये podcast शो कर like shoot कर रहे हैं.
सो ये कभी भी इशू नहीं होगा फिर आपके काम के लिए. दैट्स द थिंग आई आल्सो वांट टू ऐड हियर. या आई मीन यार मतलब जैसे जो आप नया नया काम स्टार्ट करते हो ना, तो यू फील ओवरवेलमिंग, हर कोई फील करता है, आई ऑल्सो फील टिल नाउ. आई एम राइट. डूइंग जॉब, आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, आई एम हैंडलिंग माई क्लाइंट्स, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ साथ साथ. राइट. तो मेरे पास वीकेंड्स भी फ्री नहीं होते हैं. तो आई नो पीपल माइट बी एंजॉइंग, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे लर्न करो, गिरोगे उठ जाओगे यार. राइट. बचपन से यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, राइट. इंडियंस हैं हम लोगों को तो वैसे ही इतना स्ट्रगल है. Right. And it's going to be worth it. You can't even imagine how important it is. It's really, I am also feeling that. So it's going to be worth it. Nothing is going waste. That's the last thing I want to add. तो फल मिलेगा यार. Right. अगर आपने एक पोस्ट भी डाली है तो it's valuable. अगर 0 लाइक है then also it is valuable. Don't कि आज उसको किसी ने हल्के में नहीं लेना है. That's the thing. हाँ, अरे Right. नहीं, अगर आज किसी ने नहीं देखी बट किसी को पता लगा कि आप लिखते हो, तो Right. कल दूसरा बंदा आएगा, वो पक्का पढ़ेगा. एक Right. बंदा Right. पढ़ेगा तो दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, फिर फॉलोवर्स फॉलोइंग बढ़ती रहेगी यार. फॉलोवर्स का क्या करना है, जस्ट Yeah. राइट इट Right. डाउन, Right. तो यू ऑटोमेटिकली फॉलो. Yeah, that's great and thank you so much श्रुति. हाँ, इतना ओपनली मैंने पहला पढ़ा था जिसमें बात किया लाइक नॉर्मली, नहीं तो मैं सिर्फ गेस्ट होता है, क्वेश्चन पूछता हूँ, वो जवाब दे रहे होते हैं. दैट्स हाउ इट गोस. बट यहाँ पे थोड़ा मैंने भी इन्वॉल्व हुआ हूँ यहाँ पे. तो दैट्स हाउ ऑफ इट. मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदा जब तक ओपन नहीं होगा, आई एम लाइक दिस ओनली. एंड इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी कि करियर कैसे स्विच करना है या क्या करना है, रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन आल्सो. हरिओम विल मेंशन माय लिंक्डइन प्रोफाइल ओके ऑल्सो. श्योर. Guys can reach out to me and ask if you have any doubt. हरिओम, आप भी मुझे Yeah, yeah, so sure, why not? Yeah. Okay, yeah. that's great. Thank you so much. Thanks a lot, and it means a lot to me.